अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, मैं इधर भी आती हूँ लैपटॉप पे। ठीक है, मेरा आ रहा है सामने। That means we are ready to get this thing started. Let me get the laptop closer to me. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें। वालेकुम अस्सलाम अजी बशर, जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। साकी, वालेकुम अस्सलाम। नाइस वे ऑफ सेइंग हेलो। Yes, you see meatballs. You see mini meatballs. छोटे छोटे। आपको उसके पास ले जाते हैं ताकि आप उसको बेटर देख लें। मिनी मीटबॉल्स हैं और पोटैटोस हैं। उसका सूप बनेगा आज। ठीक, थोड़े से मैंने बना लिए थे मीटबॉल्स, बाकी जो हैं वो अब बनाते हैं। और फिर गार्लिक ब्रेड बनाएंगे साथ। इधर बटर और धनिया पड़ा है जो हम बटर बनाएंगे गार्लिक ब्रेड के लिए। वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे हैं और फिर इसको ओवन में रख देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं आप सब? Khadija's Remix Collection. Assalamu alaikum. Hello and welcome. How are you? How are you doing today, my dear? आप कैसी हैं? Thank you for coming. हम नन्हे मुन्ने से मीट बॉल बनाने लगे हैं और फिर उसका सूप बनाएंगे। Thank you, thank you, thank you, Jazakallah. How are you? K Creations, how are you? Thank you for coming. Welcome. You are here. Thank you. We are just about to start now. Nelius is, am I pronouncing your name right? Nelius? Nelius K Creations. Hello and welcome. Thank you. Salamat po. Salamat, salamat. Thank you very much for coming. I'm good. I'm good. I'm preparing for the soup. So we are, as usual, we are not going to add too much stuff in it. We have garlic. We have Maggi cube, or you can use chicken broth. We have celery, fresh coriander leaves, and we have mini meatballs and potatoes. We will add a pinch of salt because the meatballs are spicy. I add salt, black pepper, and a little bit of onions in there. So they are already nicely spiced. बारा ऑनलाइन कुरान एकेडमी भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Welcome to my live stream. This is lunch hour and we are going to do some cooking here. We are going to make some lunch. So let's get started. Let me wash my hands 1 second. So her link is here. So what I did was I'm only taking
just a teeny tiny bit of meat, and I'm just going to roll it around, but I'm going to make sure that there are no onions sticking out of it, because if they're sticking out, they are going to make a mess in the soup. So we will try to keep the soup clean. So when I see onion like that, I will just take it out, and then I will make the little meatballs. I think we have enough meatballs, but I'll make a few more. Thank you for coming here. We give it to God. Thank you very much for the support. Thank you very much for coming over. You are very welcome. Welcome to my live stream. This is our lunch hour, and we are going to make meatballs. So I'm just going to roll it in my hands. Just make sure it's a nice round shape without anything sticking out. You can see we have black pepper, we have little red chili flakes, we have salt, and we have onions. Thank you guys for coming over and supporting me. Thank you very much. I really appreciate that. All onion pieces that can stick out are out. You just have to, with this finger here, you keep it like this and you keep rolling it. So once you have a nice smooth shape, your meatball is good to go. And I think those are enough. One more and we're done with the meatballs. I'll move this plate from here. Okay, just very little ones, just the size of a big grape. You know the big red grapes? You are very welcome. You are very welcome, Nelia's Cake Creations. You are very welcome. So I'm making one last one. You just let it roll in there. And we are done with the meatballs. Okay, let me wash my hands one more time. Thank you, friends, for coming over. If your meatballs are nice and smoothly done, they will not make mess. They will not break in your soup or in your curry, because I don't use all those eggs and other things to keep it. It's just plain meat, chopped meat with salt, pepper, and onions. Okay, so that leaves us with the potatoes. I will show you how to do the potatoes. Just give me 1 second. I have no idea, Bears, what I'm making next time. For now, I have no idea. Keep the suggestions coming. Okay, that's my good old trusted board, looking all worn out. So two things now we need: the potatoes and the garlic, right? And then we will cut the pepper in case we need it. So let me see if I'm on the right angle. We are going to slice the potato like this, lay it down, because we are making cubes. Same thing. If you cannot hold it like this, you can always lay it down, and then you can just
Okay, again, slice it down and cube it. So let's add those to the water because we don't want the potato to get the rusty color. We want it nice. Oh dear, bad those sounds from outside. Done with the potato. We'll go to the garlic next. Tahira bhi aa gayi hai. Tahira, we are making your favorite soup. I remember making it for you a few times when you were over here. That's the potato and garlic soup with teeny tiny little meatballs. Let's add a little more water to the potatoes. Okay. Let's put the potatoes away. Thank you, Jazakallah. My cats, huh? My kitties are somewhere. I hope they stay there. Just slice up your garlic, slice it up, and then put it back again. Okay. Not going to put too much garlic. Not going to put too much garlic, but we will try to make it as small as we can possibly. All right, so let's chop it up. You don't want too much garlic coming in your mouth, right? I could have grated it, but no, then it goes too. You know, this I like it like this. I like it chopped, but very very finely chopped. This is perfect. We still have 2-3 big slices. Let's run the knife over it one more time. A few slices were sticking to the knife. I didn't pay attention. This is perfect. You know, it's not too big and it's not too little. It's not going to disappear in the soup. We want the toasted garlic there, but we don't want big chunks. Okay, same with the pepper. We are not going to use too much. Always make sure you take the seeds out and the veins. This way you have a pepper that is not too hot. Right, so we will make same thing like garlic, teeny tiny little pieces. Chota chota, bilkul chota chota. If you want a sweet pepper in it, go ahead, have a sweet pepper in it. If you don't like the heat, that's okay. You don't have to. This is optional because there's a little bit heat already in the meatballs, and it's going to make a nice broth in there. So this pepper is optional. Hot pepper, hot chili peppers are optional. Okay.
और कौन है हमारे साथ? मकसूद गेमिंग is with us. Hello and welcome. Thank you for coming over, Maqsood Gaming. It's very nice of you to come. Okay. One more time, washing my hands. So I don't have any pepper left on my hands. Always combining desi with the just like to bring a little bit of this desi kick in my food. Doing the same thing, I'm going to use this pen so you guys can see what's going on. Just 1 spoon of olive oil. In goes the garlic. We are going to let the garlic toast a little bit. गार्लिक को टोस्ट होने देंगे। उतनी देर में हम पोटैटोज का पानी भी ड्रेन कर लेंगे और मीटबॉल्स भी रेडी हैं। Potatoes are ready, meatballs are ready, और celery है, ठीक है? Celery is also optional. You can just go with the meatballs and potatoes. You don't have to use celery, but celery tastes really, really good in soups. While we are toasting the garlic, let's drop in a little bit of let me lower the heat. I don't want the garlic to burn. Just toast. Okay, let's bring in some cumin. I'm always big on cumin. I don't know why. Half a teaspoon should do. It already smells good. Okay, now we are going to find a way to drop the meatballs in there. We are not going to let the meatballs stay in there for too long. Just until they get a little firm, we will stop. We are not going to fry them or anything. Just a little bit cold. Oops, I think I dropped one. Uh-oh. Just slipped right out of my hand. Those are bite-sized meatballs, the size of a red grape. So you can have them just like that, or you can just cut it into half. You know, it's up to you. They're coated. That's what we want. So let's give them 1 minute and then we're done with it. Sorry. Okay. How are we doing with the light? Is it okay? Okay, guys. Another few seconds. And we are adding the potatoes and the celery. I didn't want to drop the potatoes directly on top of the meatballs.
Let's bring in the celery because it's a soup. It's not a curry. It's not a salad. It's a soup. Let's heat up some water here. We are not going to use a spoon. We are not going to break the meatballs. We are just going to go slow on it. Okay, हमारे पास कौन है? Mobi's Kitchen है, Bears भी हैं. They give it to God भी हमारे साथ हैं. Thank you very much, Jazakallah, for staying with us. If we want to give heat to our soup, we can always drop that little pepper, hot pepper I cut. I know it's going to make somebody sweat, but that's okay. Not too much. Just like a fourth teaspoon of the habanero pepper. Habaneros are really hot, but then again, you don't want your soup to be blended, too blend. Let's go with a little bit of turmeric. Fourth of a teaspoon of turmeric. It's very good for health. It will give it a color, the color that we need, and it's also very good. Has a lot of that. It's very beneficial. Let's put it this way: that it's good for you. Then again, a pinch of black pepper. All this is optional. Optional. Okay. So we have the cumin, we have the black pepper, we have the turmeric. That's good. I had the water boiled, but it was a little bit cold now. Let's do this now. Alright. हमारे साथ कौन है? हमारे साथ जो friends हैं, keep messaging. Thank you. No hard spices in this, not yet. Turn the bowl around so we can prepare for the other things. Okay. Keep messaging, friends. Keep messaging. So I know you are with me. Let's add some water to this. Let me give you a good example. And if you want to keep the flavor and you want the broth just to taste like meatballs, it's okay. Otherwise, you can add a little bit of Maggi. Don't add too much because it's very high on salt and we don't want it too salty. So half will be good. But if you like more salt, then you can go ahead. That's it. That's 6 to 8 cups of water for half pound of meatballs. And we are going to let that sit, simmer, while we prepare for the garlic bread. Anyone here likes garlic bread? Meatballs are keeping them, everything is going to cook. Okay. While this is simmering, we are coming back to the cutting board. Okay.
So we have sliced bread. I got the one with bigger slices because everybody here loves garlic bread. You can have the one from the bakery. Bakery wali long bread jo hoti hai, Italian bread. Or you can use the sliced bread. Let me make 1, 2, 3, 4, 5, and 6 slices. Nice and thick slices. At Moby's Kitchen, they bake their own bread. So over here, we have to buy something that suits our purpose. Homemade Mom is here. Homemade Mom, hello. Asad TV, hello and assalamu alaikum. Welcome. सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर लगा हुआ था, मैंने आपको नहीं देखा. हेलो 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 एंड वेलकम. आप भी आगे हमारे साथ शामिल हो गए. जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच. तो गार्लिक ब्रेड के लिए पहले हम गार्लिक बटर बनाएंगे. ठीक, और गार्लिक बटर बनाने के लिए हमें गार्लिक चाहिए, सॉल्ट चाहिए, रेगुलर सॉल्ट, बटर और गार्लिक. सो पहले गार्लिक को ग्रेट कर लेते हैं हम. मैं राइट हैंडेड हूँ, लेकिन जब मेरा राइट हैंड आपके सामने आता है कैमरे के, तो वो आपका व्यू जो है उसको ब्लॉक कर देता है. So always a good idea to grate this one. So for the garlic bread, you don't want to chop the garlic. बहुत बड़े पीसेस हो जाएंगे फिर. Homemade Mom, Bears is saying I cannot find your channel, Homemade Mom. Okay, Saki will help you out. Mommy's Kitchen will help you out. Okay, let's see how much garlic we have here. Those are 2 cloves of garlic. That's enough. For 6 slices, 1 teaspoon of garlic is enough. You don't want too much garlic everywhere. So let's see. Sorry. Just a little salt. Butter is also salty. We don't want to do too much. Is it on room temperature? Yes, it is. So let's grab a little bit of cilantro. You can use parsley if you like, whichever you prefer. Who else is with her? Neelam's Kitchen is here. Neelam, assalamu alaikum. Welcome. बहुत खुशी हो रही है आपको देख के. Thank you for coming. You remembered. अच्छा, पहली बार लाइव कुकिंग करते हुए. यस, थोड़ा सा हम धनिया जो है उसको चॉप कर लेंगे. वी आर चॉपिंग cilantro. We are not going to do anything too much, just everything for flavor. We have butter, we have garlic, 1 teaspoon of garlic. We have cilantro. We're going to chop it through. You can always make garlic butter, garlic and herb butter, and you can keep it in your refrigerator. This is for the youngsters. So tell your mom and dad to
get it ready. Once it's in the refrigerator, you just take your toast, you apply the herb and the garlic butter, and just toast your bread. If you have those mini toasters, then you are safe. Okay, I don't want to waste any cilantro. Let's and we are going to need a butter knife. I'm sure of that. Okay, sorry I was a little bit far from you guys. Garlic butter and cilantro, you can do garlic butter and parsley if you like parsley more. You don't have to go to the market and buy your garlic bread. See how easy was that? Salt, garlic, herb, and butter. Butter is ready. हमारा मक्खन तैयार हो गया है, जिसमें हमने धनिया डाला है और हमने उसके अंदर सॉल्ट और गार्लिक डाला है, लहसुन. Excuse my hand. Okay. So that's your garlic butter. हमारे साथ कौन कौन है? Oh, that garlic butter tastes good. नीलम कह रही हैं कि हम एक माम आपको फ्रेंड बना लिया है. असद अभी हमारे साथ हैं, उन्होंने साथी को डन किया है. गार्लिक ब्रेड इज माय फेवरेट ड्रेस कह रही हैं. माइन टू. आई लव 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 गार्लिक ब्रेड. Texas toast, garlic bread. I used to keep them stocked up in my fridge, and then one day I just decided to make them, and here I am doing everything at home from scratch. It saves money and it's tastier. So we take one slice of bread. We are going to apply the butter. फ्रेंड्स मैसेज करते जाएं ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप मेरे साथ हैं. We are going to do both sides, so hold it this way. Hold it in a way that it's not sorry, you can't see this side because I'm holding it down. If I put it here, it's going to stick to the paper towel. So we have done both sides. Take, and we are going to put it over there. If you really want to lay it down and then do it, then you can lay it on top of another piece of bread. So whatever comes down is not going to stick to the. Okay. बिल्कुल जैसे आप अपने टोस्ट के ऊपर बटर लगाते हैं, उसी तरह आप इसके ऊपर भी बटर लगा दें, लेकिन उस बटर के अंदर टेस्ट है, फ्लेवर है गार्लिक का एंड धनिया का. राइट, सो देयर यू गो. 2 टोस्ट बन गए. ओके, लेट्स चेक ऑन द सूप because I might have to skim. I usually skim my soups. Excuse me. Sorry guys. You can always skim it. It's just healthy, but still I like my soups to be on the clear side. And you can also get rid of extra fats, you know.
नीचे से देखते हैं कैसा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, मज़े का बन रहा है। आप उसको थिक भी कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज यूज कॉर्न स्टार्च टू मेक इट थिकर। ओके, सूप बन रहा है। मैं ज़रा ओवन को भी ऑन कर दूं। प्री हीट करते हैं इसको 400 पे। 350 4 पे। ठीक, जितनी देर ये प्री हीटेड हो रहा है, हम जाके द रेस्ट ऑफ द ब्रेड को गार्लिक लगा लेते हैं। और फिर हमें एक छोटा सा और काम करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी गार्लिक लगाते हैं। मिस्सी गार्लिक लगाते हुए देखूं कि और हमारे साथ कौन है। वो भी कह रहे हैं, साकी कह रहे हैं कि मैसेज करते जाएं फ्रेंड्स, नाइस कॉलर्स। थैंक यू मोबी। हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं प्लीज़ मैसेज करते जाएं ताकि हमें पता लगता रहे कि आप हमारे साथ हैं। हम आपको सूप बना के दे रहे हैं और हम आपको गार्लिक ब्रेड बना के दे रहे हैं। मैंने इसको लगा के इस साइड से इसके ऊपर कर दिए। जो मार्केट से आती है उसमें भी ऑलरेडी ये बटर जो है लगा होता है और फिर आपने इसको सिर्फ ओवन में रखना होता है। तो अगर आप बटर बना के घर में रख लें, सो दैट मेक्स द जॉब ईजियर। काम आसान हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सूप हो मज़े का और उसके साथ गार्लिक टोस्ट हो तो और क्या चाहिए। विंटर्स में तो हम बहुत सूप बनाते हैं। इसलिए अगर थोड़ा सा टाइम से पहले हम प्रिपेयर कर लें तो अच्छा रहता है हमारे लिए, हमारा टाइम बच जाता है। सो ऐसे टाइम में बजाय बनाने के आप सिर्फ उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें, रूम टेम्परेचर पे आए तो ब्रेड पे लगा के टोस्ट पे लगाएं और उसको ओवन में रख दें। सो ये रेडी हो गए हैं टोस्ट। बटर को उठा देते हैं। नीलम क्या कह रही है? जरीनाज आपको फ्रेंड बना लिया। ओके, दैट्स गुड, लुक्स टेस्टी, जज़ाकल्लाह। साकी का लिंक लग गया है, so if you want to make friends with Saki, grab the link। थोड़ी देर में आ रही हैं आप? दैट्स ओके, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया है कि इसको फॉइल लगा के रख लिया ताकि मैं ओवन में इसको ठीक से रख सकूं। वन मोर। ये मेरा है, इसके इस साइड पे मैंने बटर नहीं लगाया। आई डोंट वांट इट टू बटरी। तो ये अब 400 डिग्रीज में ओवन में जा रहा है। उसको थोड़ी देर के बाद मैं पलट दूंगी। मुझे यहाँ से टेबल उठाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। इधर सूप जो है वो भी ठीक जा रहा है। थोड़ा सा उसके ऊपर से और वो करने वाला है। Excuse me while I move the table. Put garlic bread in there. Middle while मैं रखूंगी, and then we will check on it in a little while. Okay, coming back to the soup. Frugal cooking with Zari. Hello and अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं देखा था। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। आज हम लंच बना रहे हैं, मज़े मज़े का सूप बना रहे हैं, गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। इसके ऊपर अगर कुछ कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको
अपने सूप में पसंद नहीं है तो बाय ऑल मीन्स, और जो कुछ भी फैट्स वगैरह जो कुछ आता है ऊपर उसको भी निकाल दें, क्योंकि क्लियर सूप अच्छा लगता है। अभी हम इसमें बिल्कुल एंड पे आके धनिया डालेंगे। हमने इसको बिल्कुल भी सालन की तरह नहीं बनाना, हमें इसमें फैट्स वैट्स भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं हमको यहाँ से निकाल रही हूँ। ओके, दैट्स इनफ। थोड़ी सी अब इसकी आग को हम आहिस्ता कर देंगे। अगर कॉर्न स्टार्च हो तो आप कॉर्न स्टार्च को मिक्स करके लुकवार्म वाटर के अंदर उसके अंदर डाल के उसको थिक कर सकते हैं। हम अभी करती हूँ मैं। तो भी कह रहे हैं कि वेरी टेस्टी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मूवी को या साकी को देंगी तो वो लाइव के बाद, इस अवधि के बाद वो आपको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी हेल्प करवा रहे हैं। अगर किसी और को दिए हैं तो प्लीज़ उनको वो रिटर्न कर दें। मूवी को या मेरा जो है वो हम लाइव के बाद इंशाल्लाह आपको कर देंगे। आप अगर मेरे डिस्कशन वाले पेज के ऊपर आप मैसेज कर दें तो वो भी मुझे वहाँ से भी आपका लिंक जो है वो मिल जाता है। अगर मेरी कम्युनिटी ओपन नहीं है तो आप वहाँ पे जाके आप मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ से आपका लिंक जो है उसको उठा लूँगी इंशाल्लाह। गार्लिक ब्रेड ओवन में चली गई है और सूप जो है वो भी बन रहा है। छोटे छोटे मीट बॉल्स हैं और आलू हैं, उसका सूप बन रहा है। बहुत मज़े का सूप बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना। मैं एक सेकंड जरा यहाँ से थोड़ा सा स्टार्च ले लूँ। जब आप स्टार्च को मिक्स करें सूप के लिए तो आप उसके अंदर एक पिंच, अगर आपको सॉल्ट अच्छा लगता है तो एक पिंच सॉल्ट ऐड कर दें, ताकि आपके सूप में से जो सॉल्ट है वो उसके अंदर नहीं जाए। और लूकवार्म वाटर के अंदर मैं करती होती हूँ उसको मिक्स। और जब सूप बन जाता है, यू कैन ऑलवेज हैव हॉट पेपर ऑयल, यू कैन हैव क्या कहते हैं उसको, विनेगर, सिरका। ओके, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा सॉल्ट इसलिए डालना होता है कि जब वो कि अपने अंदाजे से डाला होता है ताकि वो फीका ना हो जाए। इसके आलू गल गए हैं, अब ये हल्की आंच पे ऐसे ही पकता रहेगा। ये देखें, आलू और सैलरी और मीट बॉल्स सब जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। मैं सॉल्ट चेक कर लूँ ज़रा। ठीक है, हमारे हिसाब से परफेक्ट है। हम ज़रा थोड़ा सॉल्ट लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश धनिया के लीव से सूप बहुत मज़े का बन जाता है। और हमारे साथ कौन है? Coco Empire is with us. Thank you very much for coming. Welcome. How are you?
How are you today, my friend? How are you doing? We are making soup today. We are making mini meatballs and potato soup with garlic toast. I like greens in my soup. So cilantro, parsley, dill, equally loved by me. You can use anything. Dills are very good. Dillweed is super in the soups. हमारे साथ जो friends हैं please message करते जाएं. Coco Empire, I'm really happy you are here. Thank you for joining us in our lunch hour live stream. And I hope I'm not missing anybody. Frugal is still with us. Thank you very much. Jazakallah for staying. Okay. Now we can move this from here. And I'm going to heat up some oil or something. Oh, my oven is making lots of smoke. Nothing is burning. It's just because I didn't use it in, let's say, 2 months. It's getting hot in here. जी होम इकमाम क्या कह रही हैं मैं देखती हूँ. Bobby Bears is saying welcome to Coco. Bears is done. Bears मेरी niece हैं. Thank you. Jazakallah. Okay guys, a little bit of fun time is I have crushed red peppers and I'm heating up some oil and you can figure out the rest. We are going to make hot chili oil. We are going to make hot chili oil. So we will use garlic and salt. Oh well, that oven is giving me a lot of smoke. Neelam done. वापस करें. Bears will also return after the live. Bears is also helping me with the links. So as soon as the live is over, anybody who left a letter for Moby's Kitchen, Saki, Bears, or me, we will return you after the live. Thank you very much for your patience. And thank you very much for sticking by us, coming over. I'm going to crush a little bit more garlic to make the chili oil. If somebody in my house wants more heat in their food, what we do is we add a little bit of chili oil.
chopping a few more cloves of garlic. Now we are going to need the cutting board because the hot oil is going to come over here and we have to pour it in our chili. This will go directly to the oil. Let's check on our soup. How is the soup doing? Soup is nice and thick and it's almost ready to be served. Let's lower down the heat. Not completely, but just to keep it warm. The soup is ready. My goodness, this oven is making a lot of smoke. Friends, keep messaging so I know you are with me. Thank you very much for coming over. बुशरा परवीन को मज़ा आ रहा है. सूप उनका भी फेवरेट है, सूप मेरा भी फेवरेट है. अगर वो मेरे पास होती तो मैं ज़रूर उनको उनके साथ शेयर करती इस वक्त. अच्छा जी, ये जो चिली ऑयल हम बना रहे हैं इसके लिए हमें गार्लिक चाहिए. मैंने सुबह पेपर क्रश करके रखी थी, ज़रा सी गर्म करके क्रश कर ली थी. थोड़ा सा हमें इसके अंदर सॉल्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए. थोड़े से आप इसमें सेसमी सीड्स डाल सकते हैं ताकि उसमें वो जो सेसमी का है फ्लेवर वो भी आ जाए. यू कैन ऐड डिफरेंट थिंग्स टू इट. तो इसको हम ऐसे रखेंगे रेडी. और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसको यहाँ पे ले आएंगे. सूप को डालते हैं डिश में. ये देखें, celery, meatballs and potatoes. छोटे छोटे हैं मीटबॉल, एक ग्रेप के साइज के. ठीक, अब इसको यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ आपके सामने. यहाँ पे रखते हैं इसको. मैं जरा डिश को साफ कर लूँ. थोड़ा सा उसमें लग गया है. एक्चुअली लेट्स पुट द रेस्ट इन इट. बगैर किसी तकल्लुफ के हम उसको उठा के सूप को उसमें डाल देंगे. मेरे किचन में इस वक्त ओवन जो है वो ब्लॉक हो रहा है. मेरी गार्लिक ब्रेड जो है वो ब्लॉक हो रही है. थोड़ा सा हीट ऊपर कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम उसका. मैं आपके लिए सूप का बॉल लेकर आती हूँ. खटाक खटाक होती है हमारे किचन में. आप चाहें तो आप ये वाला सूप के लिए यूज़ कर सकते हैं स्पून. आप चाहें तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है. तो सूप ट्रांसफर कर दिया मैंने.
और हमारे साथ कौन से फ्रेंड्स हैं हमें मैसेज करते जाएं प्लीज। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूप हमारा रेडी है और अब हम चिली ऑयल बना रहे हैं। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है आज सब कुछ जी। उसका सारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है। जज़ाकल्लाह मोबी फॉर सेइंग दैट। आप देखें कि अगर ऑयल गर्म हो गया है तो हम ऑयल को लेकर आते हैं। हम चंद किस्तों में ऑयल डालेंगे इसमें, लेकिन पहले जो गार्लिक है वो इस ऑयल के अंदर जाएगा। थोड़ी सी आग ऐसा कर दूं क्योंकि ये बहुत गरम गरम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गार्लिक इसमें जाएगा, ठीक है। ठीक, अब आग बंद। जैसे गार्लिक डालें आग बंद हो गई। अब वापस यहाँ पे आए, मैं ऑयल लेकर आती हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट द फन बिगिन। ठीक, एक किस्म में डाला, इससे मिर्च जो है वो पक जाती है। दो में डाला, मिर्च पक रही है, ये उसका कुकिंग का प्रोसेस है। ये ले, ठीक, ये हमने घर में हॉट चिली ऑयल जो है उसको बना लिया है। अब 1 मिनट में मैं इसको हिलाती हूँ। आप इसको बना के किसी कंटेनर में रख सकते हैं। देखें अभी तक उसका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। मिर्च जो है वो पक रही है, ठीक है। मैंने वीडियो भी बना कर डाली थी इसकी। इसमें थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर में आप तक आती हूँ। ये बहुत गरम गरम होता है। ओह माय गॉड, इट स्मेल्स सो गुड, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये आपका ऑयल जो है बन गया है। अब जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसको एक जार में डालना है और रख देना है। तो जब भी आप कुछ मज़े का खाने लगे, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा किक चाहिए हो, आप थोड़ा सा लें और अपने खाने के ऊपर डाल लें। मैं और हमाद जो हैं ये हमेशा रखते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। वेलकम बैक नीलम, कह रहे हैं मूवी नीलम अब वापस आ गई हैं। वेरी गुड, थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग बैक। ओके, अब आते हैं वापस हम सूप की तरफ। एक नज़र मुझे गार्लिक ब्रेड पे भी डालनी है। गार्लिक टोस्ट ऑलमोस्ट बन चला है। इसके टेक लाइक, मैं ओवन बंद कर देती हूँ। ओके, सो ये जो चिली ऑयल है ये मुझे बहुत पसंद है। किसी भी गिवन टाइम में ये जो चिली ऑयल है, ये देखें अब थोड़ा सा ठंडा हो चला। जैसे जैसे ठंडा होगा वो पेपर्स अपना कलर भी उसके अंदर रिलीज कर देंगी। मुझे अमतुल पूछ रही थी कुछ दिन पहले कि वो जो ब्लैक में पड़ा हुआ वो क्या है, तो मैंने उनको कहा था कि चिली ऑयल है, और मैंने उनको कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको बनाना भी सिखाऊंगी। आई होप वो देख रही थी। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए ओवन को ओपन करने के लिए, so I'm moving the table around a little bit. Let me get to the bread, then we will be back. I need to grab the bread out of the oven. So you can see the kitchen space is a little bit limited. मज़े का टोस्ट बना है, मज़े का। अभी आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। देखा,
I have to go around और टेबल को मूव करके सारा कुछ मूव करके फिर मुझे गार्लिक ब्रेड ओवन में से निकालनी पड़ी है. Another reason कि मैं ओवन क्यों यूज नहीं कर रही हूँ आजकल. आपका सूप भी वापस टेबल पे और आपकी प्लेट भी वापस टेबल पे और हम यहाँ पे आ गए हैं. ठीक. Yay! We did it. We did everything in 1 hour. As usual, मैं आपको दिखाती हूँ गार्लिक ब्रेड. ये देखिए गार्लिक टोस्ट. ठीक, सही बन गया. इसको इधर रखते हैं. अब हमारे पास हॉट चिली ऑयल है, हमारे पास गार्लिक ब्रेड है और हमारे पास the chili oil smells so good. I cannot get over it. बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है उसकी. बिस्मिल्लाह. हम आपके लिए let's get you started on the soup. I'm being a little bit sloppy with the soup today. I know that, but please forgive me. Uno more. Right there. Okay. Let's move the soup from here. And let's get you the garlic toast. कौन है हमारे साथ? हमारे साथ होम मेक मॉम है, फ्रूगल है, बुशरा है, मूवी है, साथी है, बेयर्स हैं. Good, thank you guys. Jazakallah for being here. आप इसको चाहे तो आप स्लाइस को you can cut it from the middle. It's nicely toast from both sides and it's ready. ठीक. Oh, so good. मैं खुद ही कहती जाती हूँ so good क्योंकि मुझे खुशबू आ रही है बहुत सारी खुशबू आ रही है मुझे बहुत सारी चीज़ों की. मुझे अपने जो हॉट पेपर है उसकी भी आ रही है खुशबू, चिली ऑयल की. आप लोग हमेशा कहते होंगे ये शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द चिली हॉट ऑयल, इसलिए आज आपको बनाना सिखा दिया है मैंने. नाउ यू गाइस कैन मेक इट एंड यू कैन कीप इट इन अ जार. और उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत बहुत लंबी होती है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द शेल्फ लाइफ फॉर दिस. ठीक है, सूप रेडी है. And sorry about this. You can always take the garlic chili oil and pour a little bit whatever you are serving. I'm coming, guys. I'm getting you the garlic chili oil. You can always keep it close by if somebody needs it. किसी को हॉट सॉस चाहिए होती है, किसी को ये चाहिए होता है. और कौन है हमारे साथ फ्रेंड्स, बताते जाएं. आज भी देखिए मैंने आपको 3 चीज़ें 1 आवर में बना दी हैं. मैंने आपको सूप बना के दिया है, मीट बॉल एंड पोटैटो सूप, और गार्लिक ब्रेड बनाई है, और हॉट चिली ऑयल जो है वो भी हमने बनाया है. ठीक. और हमारे साथ कौन है? XK Army. Hi guys, I'm new here. Hello, how are you? And welcome. I didn't see you before because I was a little bit absorbing the food. And hello and welcome. Thank you very much for coming.
Your link is up for grab. If somebody wants to make friends with you, they will do that, and I will return anybody's gift after the live. Moby, Saki, Bears, and me, we will return after the live. Thank you very much, guys, for your patience, for coming, for staying. Okay, I'm fine. I'm happy to hear that. We had we made in the lunch today mini meatballs and potato soup, and we made garlic bread. If you guys want to go closer, I will take you closer. That's the hot chili pepper oil with garlic. I think I'm blocking the lights. Sorry. That's mini meatballs and potato soup with celery, and that is our garlic bread. This is lunch today. It's not too heavy, and it's kind of healthy. Thank you, friends, for coming. Make sure you give me thumbs up. Thank you very much. नीलम कह रही हैं so good dear. Thank you, नीलम. I appreciate that. आपको अच्छा लगा. What else can I ask for? If friends come over and they like my cooking, what else can I ask for? यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. देखिए हमने परफेक्ट टाइम में 3 चीज़ें बना ली हैं. हॉट चिली ऑयल दैट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 6 months बिकॉज थोड़ा सा यूज़ होता है. एंड देन वी हैव द potato soup with mini meatballs. You can use any mince beef or lamb or chicken, whatever is your favorite. You can use that. And then you can always prepare the garlic butter that I made in front of you. You can always get the butter prepared. You can use garlic, butter, any butter that you are used to, and add some herb to it and a pinch of salt, and keep it ready in your refrigerator. So whenever you want to make a garlic toast, you can just apply, like you apply butter on your toast, and you put it in the oven. Make sure it's high temperature between 400 to 425, and your garlic toast will be ready in no time. And it's so good, and it's not only smelling good, it's tasting good too. I tasted a little bit. थोड़ा सा taste किया है. And guys, you see the garlic, toasted garlic, and you see the chili oil. You just grab a little bit and you just pour it over your soup. That will give it a kick. If you like hot food, if you don't like hot food, you can just skip that. And we will put it right back over there. Oh, I hope I'm not dropping it everywhere. That is my favorite, so I shared it with you today. My favorite soup with my favorite hot chili oil and garlic bread. Everything here is my very, 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 very favorite. नीलम खुश हो रही हैं. आप भी आ जाएं. नीलम आप भी आ जाएं. मोबी सब फ्रेंड्स आ जाएं. देखिए मैंने कितना इजी आपके सामने बनाया है. KX Army पूछ रहे हैं where are you from sis? I'm originally from Pakistan and I live in Brooklyn, New York. Currently I'm here. Moby is saying learn something every day. Thank you, Moby. If you think so, I appreciate that. You guys, when you come over and you watch me cook, that makes my day. You know, I really, really appreciate that. All your help and Bear's help and all the friends that come over and support me. Thank you very much, guys. Frugal sanitizer दे रही हैं. Thank you, Frugal. Goodbye कह रही हैं Bears. राही's किचन व्लॉग भी हमारे साथ आ गए हैं. राही, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. हाउ आर यू? आप भी लंच में हमारे साथ शामिल हो जाएं. हमने मीट बॉल और पोटैटो का सूप बनाया है.
और हमने साथ में गार्लिक ब्रेड बनाई है। बुशरा परवीन जज़ाकल्लाह कह रही हैं, बाजी बुशरा आई विश आपको मैं ये सूप दे सकती, लेकिन क्या करूं। वो भी कह रहे हैं ऑसम। अभी हम 1-2 मिनट में इसको लाइव को फिनिश कर देंगे। वी कैन हैंग आउट फॉर फ्यू मोर मिनट्स इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू डोंट हैव टाइम इट्स ओके। सो हमारा फूड तो बन गया है, हमने आपके सामने रख दिया है। राही भी हमारे साथ हैं। राही थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप शामिल हो गए हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, आप हमारे साथ शामिल हो गए, मैं बहुत खुशी हुई, थैंक यू। इजी इजी फूड हम बनाते हैं और यमी बनाते हैं, जो 1 आवर में बन जाता है और डिलीशियस भी होता है, वो हम बना के आपको देते हैं। ये देखें, हमने मीट बॉल का साइज़ छोटा रखा था, जितना बाइट साइज़ होता है उतना रखा है हमने मीट बॉल का साइज़। और पोटैटो को भी हमने उसका साइज़ भी क्यूब करके इतना ही रखा है कि जो खाते हुए सूप में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। और साथ गार्लिक टोस्ट है। गार्लिक टोस्ट तो आप देखें दोनों तरफ से, ये देखें, ये नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी टोस्ट हुई हुई है, गोल्डन ब्राउन है, और ये वाली साइड भी गोल्डन गार्लिक आपको नज़र आ रहा है, साथ धनिया है, और वो हमने बटर बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर लगा लिया। मज़े का, मुझे टोस्टेड गार्लिक बहुत मज़े का लगता है। आप यूके से हैं? अच्छा ठीक है, आप यूके से हैं, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। साकी और मोबी और बेयर्स की उधर से हैं, कनाडा से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोबी वेलकम कह रहे हैं राही को। मैं रोज़ मंडे टू फ्राइडे लाइव होती हूँ 12 PM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, 12 PM से 1 PM जो लंच आवर होता है दोपहर को, उसमें मैं लाइव आती हूँ और जो कुछ हम बना रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज जो कुछ हमने बनाया है आपके लिए वो आपके सामने है। हमने हॉट पेपर ऑयल भी बनाया है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगी इस रेसिपी का। मेरे मेरे उसमें है, प्लेलिस्ट में है, चटनीज एंड आई थिंक चटनीज एंड सॉसेस समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर होगा चटनीज एंड स्पाइसेस। और उसके अंदर लिंक भी पोस्ट कर दूंगी नीचे, जब ये वाईटी रिलीज करेगी, इसको प्रोसेस कर लेगी इसको। राही मूवी को हेलो कह रहे हैं, इसका मतलब है राही और मूवी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दैट्स वेरी गुड जी। मैं इसकी रेसिपी जो है इसको इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगी, बिल्कुल उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें जाके मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगी। और जो सूप के इंग्रेडिएंट्स हैं वो पोटैटो एंड मीट बॉल है, छोटे छोटे साइज में, और आपके सामने बनाया है। गार्लिक ब्रेड भी, जिसको जो चाहिए हो वो पूछ लिया करें, इंशाल्लाह ताला। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ की रेसिपी बना के डाली हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दिया करें। और गो बैक इन द प्लेलिस्ट एंड आई विल टेक इट आउट फॉर यू। राहिस किचन व्लॉग कह रहे हैं नाइस कुकिंग, थैंक यू जज़ाकल्लाह। मोबी कह रहे हैं लाइक योर वेजी चिकन पास्ता, मैं भी जाके देखूंगी। अब तो शुक्र, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम मामा, कैसी हैं आप? आज थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे पता है आपकी कुरान की क्लास होती है। बाजी बुशरा कह रही हैं अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह बाजी बुशरा। आप भी बनाएं या मेरी तरफ आ जाएं या आप बना लें, ये तो अब आपकी मर्जी है। अभी सूप गरम गरम है, आ जाएं। मोबी को भी पसंद आया है आपका आपका जो वेज एंड चिकन पास्ता था, और साकी को भी पसंद आया। सही है। मामा कह रही है गुड मामा, हमने बनाया है आलू और छोटे मीट बॉल्स का सूप, और हमने हाथ चिली ऑयल बनाना सीखा है आज, और साथ हमने गार्लिक ब्रेड बनाई है। ये छोटा छोटा
मीट बॉल है इसमें और आलू है क्यूब किया हुआ, उसका सूप हमने बना लिया था। ठीक, और फिर हमने गार्लिक ब्रेड बना ली थी, ये मैंने बनाई थी आपके घर में भी हिबा के लिए, बिल्कुल सेम रेसिपी है। बटर, गार्लिक, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड धनिया, बटर बना के रख लिया और फिर हमने टोस्ट पे लगा के उसको टोस्ट कर लिया। और फिर वो जो चिली ऑयल है वो वहाँ पे पड़ा है इसके पीछे आपको पीछे भी ले आए, यहाँ पे चिली ऑयल बनाया है, अभी ठंडा होगा तो हम इसको जार में डाल के तो रख लेंगे इंशाल्लाह। उसको मैंने पीछे छुपा दिया क्योंकि वो बहुत गर्म है, मैं उसके साथ कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए उसको मैंने साइड पे कर दिया है। ओके गाइस, नाउ इट्स 1:15, टाइम फॉर मी टू गो बिकॉज आई हैव टू सर्व द लंच। आई हैव ए हंग्री मॉम just coming and checking up on me, what's taking me so long. नीलम आपकी बहन है? ओके ठीक है, नीलम कुवैत में है, आप यूके में हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। Oh, that's good to know, right? हम तो शुक्र कह रही हैं, उनको गार्लिक ब्रेड अच्छी लगती है। गार्लिक ब्रेड, जी मामा गार्लिक ब्रेड का तो क्या बात है, अच्छे से टोस्ट हुई हो, बहुत ही मज़े की टोस्टी बनी है, दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो गई है। नीलम पूछ रही हैं सिर्फ आप डेली आती हैं लाइव कुकिंग? जी मंडे टू फ्राइडे आती हूँ मैं इसी टाइम पे 12 से 1 तक न्यूयॉर्क के टाइम पे। मंडे से फ्राइडे, सैटरडे को मोबिस किचन होता है, आप वहाँ भी ज़रूर आए। मोबिस किचन वहाँ पे कुछ बेक करते हैं या कुक करते हैं और हमें ललचाते हैं, साथ हमारे चैनल्स को चेक करके हमें बताते हैं हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अरे वाह, मेरे लैपटॉप की बैटरी को मैंने चेक ही नहीं किया, मेरी बैटरी भी अब डाई हो रही है। ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। आई नो यू आर हैंगिंग आउट, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा ना वो हो रहा है, बैटरी को बिल्कुल रेड पे आ गई है, मैंने देखा ही नहीं, मुझे उसको जाके चार्जर पे लगाना है। खुदा हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। मैं कल भी आपसे मुलाकात होगी, ज़रूर आइएगा, कल भी कुछ मज़े का बनाएंगे, कुछ सोच रखूंगी मैं। ठीक, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। मैं अब इसको बंद करने लगी हूँ लाइव को। बहुत बहुत शुक्रिया सबके आने का, जज़ाकल्लाह।